Hey, this is Sunny with my Bollywood Body and welcome back to our Day 55 Fat to Fit Transformation Series in collaboration with My Protein. शुरू में मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ, a lot of the times लोग मेरे से पूछते हैं सनी भाई माई प्रोटीन वालों के बारे में आप बात तो करते हैं लेकिन समटाइम्स उनकी सेल होती है, समटाइम नहीं होती. मेक श्योर इफ यू यूज माई कोड आई नो सनी यू विल गेट 30% discount. In some countries up to 50% discount. So again try your luck. कोई बंदा ये जनवरी में वीडियो देख रहा है, कोई सितंबर में देख रहा है, कोई अक्टूबर में देख रहा है. So try your luck. जो लिंक है उनका वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. Hit that link. Use my code I know Sunny to get exclusive discount. Day 55 के अंदर I want to get you back into. आपने देखा होगा हमने ये सीरीज थोड़ी सी तोड़नी पड़ गई थी because of COVID-19. Getting back right into it. Gyms खुलने लग गए हैं. So I'm gonna start you off 5 to 6 days at home and then throw you right back into the gym. Starting off with the stretching. आपको पता है हमने बेताशा वीडियोस डाली हुई है स्ट्रेचिंग की, लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं पता स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, हिट दिस लिंक अबव. वो आपको एक स्ट्रेचिंग की वीडियो इधर ही किथे लिंक कैमरा मूव कैमरे वाला बाइक मूव होता मेरा हाथ मूव इधर ही ओए खड़ जा. So hit that link above and it will take you to the video जहाँ पे आप हमारे साथ स्ट्रेच कर सकते हैं. Once that is done, let's get started. जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, हमेशा की तरह इस 4 सेट्स ऑफ 50 हाई नीज, 50 हाई नीज, 30 सेकंड ब्रेक, उसके टोटल आपने 4 सेट लगाने हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिगिनर ओरिएंटेड कंडीशनिंग एक्सरसाइज आपका स्टैमिना बिल्ड करने के लिए. अगर आप लोगों ने काफी अर्से से जिम नहीं, इवन हमारी सीरीज भी फॉलो कर रहे हैं, आपने जिम नहीं किया, always start slow. So that's why day 55 we want to start you slowly back into the transformation series. Let's get going guys, let's go. 2 4 6 7 8 9 10. See, the key is the higher. जितना आप ऊपर घुटने को जा सकते हो, take it as high as possible. Your focus should throughout be on your breathing and counting. So inhale through nose, exhale through mouth. Take some carbon, oxygen in, exhale some carbon dioxide in. That's the key. Nice and slow. Inhale through nose, exhale through mouth. 50 repetitions. 30 second break. 50 repetitions, 30 second break. उसके टोटल आपने 4 सेट बनाने हैं. जब आप 4 सेट किसी भी एक्सरसाइज के बना लेते हैं, उसके बाद 1 से 2 मिनट की ब्रेक लें. That is the break जिसके अंदर आप अपने Gatorade या EAAs या BCAAs ले सकते हैं. Once you're ready, we're going to move on to our second exercise. I hope you have enjoyed your break. Second exercise जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, it's called squat jumps. हमने 4 सेट 20 रेपिटेशंस के लगाने हैं, 30 सेकंड ब्रेक्स इन बिटवीन. अगेन द की इन स्क्वाट जंप्स इज व्हेन अगर तो आप जंप नहीं लगा सकते, सिंपली स्क्वाट गेट बैक अप, स्क्वाट गेट बैक अप. लेकिन अगर आप जंप लगा सकते हो, सो यू गो डाउन एंड यू थ्रस्ट अप नाइस एंड स्लो. हियर वी गो. सो यू विल सी आई लैंड. जब मैं लैंड करता हूं पूरा पैर नीचे आता है, ये नहीं कि मैं पंजे के ऊपर से लैंड कर रहा हूं. सी फुल लैंड ऑल द वे डाउन. ब्रीथ. हियर वी गो. नाइस एंड स्लो. So the key is you do 20 repetitions. अगर तो आप जंप नहीं लगा सकते, you simply squat down, take your butt, जितना नीचे आप अपने butt को जा सकते हो लेके जाओ. Thrust up. जब आप thrust up करते हो, you're using again. There is quads, there is hamstrings. You want to use both muscles, so you got to make sure you jump. If you can't jump, then just do a regular squat. Otherwise, try your best to do the jump. 20 repetitions, 30 to 45 second break. Total इसके भी 4 सेट बनाने हैं. जब 4 सेट पूरे हो गए, 1.5 से 2 मिनट की ब्रेक. Recover. BCAAs, EAs or water. Let's move on. So तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, it's called jumping jacks. हमने 4 सेट 20 रेपिटेशन के लगाने हैं 30 सेकंड ब्रेक के साथ. अगेन एज आपने देखा होगा इस किस्म के वर्कआउट में आप डे 20, 22, 23 के करीब रख रहा था, लेकिन अब मैंने दोबारा से 55 to 60 आई वांट टू रिकंडीशन यू, क्योंकि मुझे पता है बेताशा लोग जो हैं दे गॉट ऑफ द फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन. मेरा खुद देख लें, कोविड-19 के करके आई स्टॉप ट्रेनिंग, आई गेन 20-30 पाउंड, 10-12 किलो, बट it's normal for everybody to gain and lose weight. That's why I'm resetting it. 5 दिन just to get your body conditioned, and then we're going to go into high intensity interval training again. 4 सेट 20 रेपिटेशन के सावधान विश्राम. Ready, get set and go. 1 2 3 all the way up. 4 5 और पूरे पैर को जमीन पे नहीं रखना, अपने पंजों से बैक एंड फोर्थ जाना है.
What I'm doing is I'm keeping all the focus on my breathing. Inhale through nose and patak karke. Exhale through mouth. 20 repetitions, 30 to 45 second break maximum. 4 set. उसके बाद 1.5 से 2 मिनट की ब्रेक लें. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में. So अभी तक हमने क्या किया? हाई नीज से हमने शुरू किया, which is building your stamina, working on your stamina. दूसरी एक्सरसाइज squat jumps. Squat jumps again it's a compound movement, lower body strength के you're working on your vertical as well. Speed के ऊपर भी काम किया. Jumping jacks. Jumping jacks again building your stamina. Now we're going to work a drill which is called a 5 feet basic exercise. फुटबॉल ड्रिल भी इसे कहते हैं, 5 फीट भी कहते हैं. दिस इज टू बिल्ड स्पीड. जितनी फुर्ती जिसे कहते हैं, जितनी फुर्ती जिसे कहते हैं, जितनी शरीर के अंदर स्पीड आएगी, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग के लिए भी आप में स्पीड होना जरूरी है. हमने 4 सेट 50 रेपिटेशंस के करने हैं, 30 सेकंड्स. अगेन मैं आके कहीं पे बोलता हूँ 30 to 45 सेकंड्स. इस किस्म की एक्सरसाइजेस में द शॉर्टर द ब्रेक इज द मेरियर इट इज. रेडी, गेट सेट, इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ ऑन योर टिपी टोज एंड गो. छोटे छोटे कदमों के साथ just stay on your tippy toes. Do as many as you can. You're gonna do 50. Nice and slow. And boom. 50 repetitions, 30 second break. इस किस्म के आपने टोटल 4 सेट बनाने हैं. जब आपके पूरे हो गए, again, after every 4 sets, I want to give you 1.5 से 2 मिनट की break to bring your heart rate back down. Bring your जो सांस आपको चढ़ता है back down. In between the breaks, because again you're doing high intensity training, then I want you to drink some BCAAs, your water, your Gatorade, your electrolytes, just to repair the damaged muscle fibers. मिलते हैं last exercise में. फाइनली हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज के ऊपर आ गए हैं. हमने अब पुशअप लगाने हैं. हमने स्पीड पे भी काम किया, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे काम किया, ओवरऑल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया, आपके स्टैमिना के ऊपर काम स्टैमिना के ऊपर काम किया. अब हमने 5 सेट 10 पुशअप के लगाने हैं, विच इज द मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज व्हेन इट कम्स टू बेसिक कंडीशनिंग वर्कआउट्स. हमने 10 पुशअप लगाने हैं, 30 सेकंड की ब्रेक लेनी है और टोटल इसके 5 यानी 50 पुशअप आपके डे 55 में हम लगा रहे हैं. आप घुटने नीचे रख सकते हैं, लेकिन हिम्मत है तो आप घुटने उठा के पूरे प्रॉपर पुशअप भी करें. Whenever you're doing a push-up, I like to keep my hands little wider than shoulder width apart. जब आपने नीचे जाना है, आप come on your tippy toes, drop your knees down. आपका पेट, chest and stomach has to touch the ground at the same time. Let's go. See, you can keep your knees up or you can put your knees down. Whatever you like. So, now see the key is it's very important to understand आपने एक्सरसाइज पूरी फिनिश करनी है. It doesn't matter कि आप घुटने उठा के रखते हैं कि घुटने नीचे रख के रखते हैं. आपने 10 रेपिटेशंस 30 सेकंड काउंट करके ब्रेक. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. नीचे जाएं, इनहेल, ऊपर आते हुए ब्रीद आउट, मुंह से सांस बाहर निकालें. 50 आपके पुशअप बनते हैं. जब वो खत्म हो गया, उसके बाद आई वांट यू टू वॉक. अगर आप वॉक कर सकते हैं 15-20 मिनट वॉक करके देखें, बिकॉज जस्ट टू ब्रिंग योर हार्ट रेट बैक डाउन. ये तो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं यार हमने काफ़ी अर्से से वर्कआउट नहीं किया, लेकिन सनी भाई हम सीधा डे 55 में जा रहे हैं. लेकिन अगर आप थ्रू आउट ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज फॉलो कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली गो आउट फॉर अ 20 to 30 मिनट जॉग आउटसाइड. सिर्फ ये 4 दिन 5 दिन मैं इजी रख रहा हूँ, 55 to 60, then I'm going to go right back into high intensity training. Day 100 तक जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, I want to trim you guys down. I see a lot of transformation stories. मुझे बेताशा मिलती रहती है on a daily basis, Instagram, Facebook के ऊपर. Sunny bhai, I lost 10 kgs, 20 kgs. So thank you very much for following us. Thank you very much for watching our videos. Thank you very much for being a part of my Bollywood Body family. Dripping lights paint the skies, all because